A very pleasant morning to all the dear students of class 9. In the previous video, as we have started with the chapter lines and angles and have known and have discussed a theorem that vertically opposite angles are equal. It means when two lines were intersecting, they were forming the vertically opposite angles, two pairs of vertically opposite angles, and we have proved that the vertically opposite angles were equal using the linear pair concept. Okay. Now in this video, we will discuss further the parallel lines and a transversal means when there are two or more parallel lines and a transversal falls on those parallel lines, then the different pairs of angles are formed and we will learn the properties of these angles or the characteristics of these angles. It means like they are equal or they are supplementary and what type of angles are formed. So it is also the concept from the previous classes. You have been learning from 7th standard that two parallel lines or two or more parallel lines when intersected by a transversal at different points, then the angles are formed like I have written for you. Angles are formed, corresponding angles, alternate interior angles, okay, alternate exterior angles, interior angle on the same side of transversal, which are also called as co-interior angles, okay. And we have different properties associated with these angles which helps us to solve the questions and to know about the parallel lines. And in this section we will prove around the four theorems based on this parallel lines and transversal, and all the four theorems are very simple concept, just you have to understand them. I have written for you that. And so let us start. These are the notes that you are seeing on the screen and you have to make them, okay. I'm explaining simultaneously. So parallel lines and a transversal. I have drawn two parallel lines M and N which are intersected by a transversal L. Okay, so transversal L के intersect करते हुए इस point पर and इस point पर, if I mark it as P and it as Q, so P and Q point पर like P point and it is Q point. So the lines M and N, the two parallel lines, are intersected by the transversal L at point P and Q. तो उन्होंने क्या फॉर्म किए एंगल? आई हैव नेम्ड इस P पॉइंट पर 4 एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे आपके. एंगल 1 आई हैव नेम्ड देम, एंगल 2, angle 3, angle 4, likewise angle 5, 6, 7, 8. So when two or more parallel lines are cut by a transversal, then following pairs of angles are formed. Okay, corresponding angles, तो जब आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो आप उससे रेफर करेंगे. corresponding angles are angle 1 and angle 5. So it means this, okay, this is angle 1 and angle 5. These angles are called as corresponding angles, okay. corresponding angles जो आपकी फर्स्ट लाइन है और दूसरी लाइन है, दोनों लाइंस की सेम पोजीशन पर, एंगल 1 जिस पोजीशन पर है एंगल 5 भी उसी पोजीशन पर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसीलिए इसको corresponding बोल रहे हैं, ठीक है, correspond कर रही हैं एक दूसरे को. Angle 1, angle 5 are corresponding, angle 2, angle 6 are corresponding, angle 4 and angle 8 are corresponding, and angle 3 and angle 7 are corresponding. So 4 pairs of corresponding angles are formed, and we will learn that corresponding angles we know earlier, but here also we will repeat that corresponding angles are equal, okay. Likewise, next is alternate interior angles are formed. Alternate means one at one side and the other angle is at other side, alternate sides, okay, means same का opposite हुआ आपका alternate. Interior means अंदर की तरफ, alternate interior angles you know very well. So alternate interior angles are 4, 6, 3 and 5. Two pairs of alternate interior angles are formed because these are interior angles, and alternate 4 is at this side, left side, and 6 is at right side. So 4 and 6, 3 and 5 are two pair of alternate interior angles. Now alternate exterior angles, it means they are alternate and they are present at the exterior side. So alternate exterior angle will be your angle 1 and angle 7, okay, exterior side angle 1, angle 7, angle 2, angle 8. These are two pairs of alternate exterior angles, okay. Then interior angle on the same side of transversal, which is also called as co-interior angles.
Okay, they are also called as co-interior angles or consecutive angles या consecutive interior angles भी बोलते हैं. Consecutive interior angles या co-interior angles, ठीक है, या interior angles on the same side of transversal. So हम co-interior angles से इनको denote कर सकते हैं. The interior angle on the same side of transversal means same side means this side, left side, or interior, है ना, co-interior. So angle 4 and angle 5 is one pair of co-interior angles, and angle 3 and angle 6 is another pair of co-interior angles. So when two or more parallel lines are cut by a transversal, these type of angles are formed. Now we will learn one by one about the characteristic or property of these angles are formed, that what they do. So first one is your corresponding angle axiom, जो आपकी बुक में मेंशन है as axiom 6.3, because 6.3 is because two axioms of chapter 6 you have learned in the previous video, that was the ray falling on a straight line and forming the straight angle or linear pair, okay, that we have understood. And here it is third axiom of this chapter, so it is corresponding angles axiom. So if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. It means जो आपके 4 pairs of corresponding angles form हुए थे वो हमेशा equal होंगे. So it is an axiom because it is proved by assumption or by just taking something that axiom, जैसे मैंने आपको बताया था कि it will be true. Okay, so मैं आपको explain करती हूँ कि कैसे हमने ये देखा है कि transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. And उससे पहले आप इसका converse देखिए, see its converse. So इसका converse आपका क्या होगा, जो ये axiom है इसका converse ये होगा, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the lines are parallel to each other. ठीक है, तो समझिए आपके पास axiom है कि अगर दो parallel lines हैं, वो एक ट्रांसवर्सल उनको कट करती है, तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे. ये आपका एक्सियम है. इसका कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, रिवर्स. कन्वर्स ये हुआ कि आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो सबके सब इक्वल हैं, देन यू विल कंक्लूड दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, जिन पर वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं. तो ये कन्वर्स है. सो see a small or short reasoning for proof तो नहीं कहूँगी, reasoning for this axiom. Okay, class 9, for the reasoning of this corresponding angle axiom, what we will see, let us draw a straight line AD and take 2 points B and C on it, and at B I have drawn an angle which is 110 degree. Okay, I have drawn 110 degree, like you can see it is 110 degree. And similarly draw angle of equal measurement at C, that is 110 degree. So you have drawn 110 degree here also. So you have drawn two equal angles at B and C. Now if you will extend this line, let it be BX, XB, and it is YC. So if you will extend this XB line like this, and also this line YC, okay, what you will see that these lines that are extended, like it can be named as P and Q. Okay, so the line XB is extended to P and the line YC is extended to Q. Then you will see that these two lines will never meet with each other when you extend these. It means they will be parallel. Okay, these lines are parallel. और आप इनका ये altitude, this perpendicular distance between the two lines, ये अगर आप measure करेंगे तो ये भी हमेशा यहाँ पर भी at each and every point between these two lines will be equal. So that is a characteristic of parallel lines. It means the two lines are parallel. So it says it according to this, and we can see that these two angles we have drawn are equal and the lines are coming parallel. So when the angles are equal, I have proved the converse of the axiom,
that when the angles are equal, the lines on which these angles are drawn, the corresponding angles are equal, then the lines are parallel. Okay, similarly you can say that the जब पैरेलल लाइंस होंगी तो ये वाले जो corresponding angles होंगे ये हमेशा आपके equal होंगे. So this is the axiom of corresponding angles. Corresponding angles when formed when two or more parallel lines are intersected by transversal, then four pairs of corresponding angles are formed and they are equal. So next, moving towards our theorem 6.2. Theorem 6.1 was your vertically opposite angles, and now theorem 6.2 I am explaining. Now, theorem 6.2 says if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. Okay, it means अगर टू पैरेलल लाइंस है और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो जो आपके टू पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, कौन से थे? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द टू पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 आर द is the next other pair of alternate interior angles. So we are saying that if the two parallel lines are there and it is cut by a the parallel lines are cut by a transversal, then the two pair of alternate interior angles are equal. It means we have to prove that angle 1 is equals to angle 2 होता है हमेशा, and angle 3 is equals to angle 4 होता है. ठीक है, जब दो parallel lines हैं. So how we will proceed? Given is AB and CD are two parallel lines and cut by a transversal T. So ये हमने consider कर लिया. Consider AB and CD are two parallel lines like this and they are cut by a transversal T. So the angles formed are like this, and I have to prove angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4, and I will take help from angle 5 and angle C, that's 6. That's why I have named them. Okay. So simple theorem, very simple proof. करना क्या है आपको? We have, understand that we have angle 2 is equals to angle 5, vertically opposite angles. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल T और ये CD दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ओके, बट एंगल 5 को आप देख रहे हैं कि एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. मैंने कहा एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है. ओके, एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? दैट angle 1 is equals to angle 2. Okay, Euclid axiom again. So that was the meaning and importance of axioms. That is angle 2 is equals to angle 5, vertically opposite angles. आप जब भी थ्योरम प्रूव करेंगे या क्वेश्चन में भी कहीं पर भी किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे. हाफ मार्क होता है इसका एग्जाम में, द रीजनिंग कि आपने किया कैसे. वाई एंगल 2 is equals to angle 5 because vertically opposite angles. बस इतना लिखने की ज़रूरत है. इट इज़ अंडरस्टूड दैट दे आर इक्वल, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम से. देयरफॉर 2 5 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया. तो आपने एक पेयर प्रूव कर दिया कि इक्वल है. नेक्स्ट इज योर ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6. सिमिलर रीजनिंग वी आर यूजिंग. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, बट एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, and therefore angle 3 becomes equal to angle 4. Okay, so simple proof. Therefore we say that hence angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4, which are alternate interior angles. Now moving towards the next theorem. So theorem 6.3 is again simpler one and it is basically the converse of the previous theorem. मतलब 6.2 theorem का converse है ये. converse means उल्टा, opposite, ठीक है, reverse direction में. तो हमने 6.2 में ये प्रूव किया था कि दो parallel lines हैं तो alternate interior angles equal होंगे. यहाँ पर हम ये प्रूव करने वाले हैं कि टू पेयर या वन पेयर ऑफ alternate interior angle भी अगर equal हो जाए, हमें एक पेयर भी अगर मिल रहा है alternate interior angles का equal, then we will say that two lines are parallel. It means basically previous theorem का conversion है ये theorem. So it is written if a transversal intersects two lines in such a way that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. Okay. Given, consider two lines AB and CD are cut by a transversal T such that angle 1 is equals to angle 2. Okay, हमने consider कर लिया
कि एक पेयर ले लिया हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. प्रूफ वी हैव, अब प्रूफ के लिए हमें 3 यूज़ करना है, एंगल 3, तो मैंने वो मार्क किया है. सो वी हैव एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल. Vertically opposite angles. Angle 2 is equals to angle 3 and angle 1 is equals to angle 2 given, क्योंकि आपको दिया हुआ है एक पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल 2 is equals to angle 3, angle 1 is equals to angle 3, angle 2, so we will say angle 1 is equals to angle 3. therefore angle 1 is equals to angle 3. it means आपने क्या कर दिया, अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया. आपने एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर इक्वल हो गया. देन देयरफॉर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम वी गेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में ये है कि अगर आपको एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल मिल गया तो आपकी जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, जो मैंने आपको फिगर बनाकर समझाया था. ठीक है, सो इन दिस वे द टू लाइंस गेट पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. नाउ मूविंग टुवर्ड द थ्योरम 6.4. Now let us move towards our next theorem, that is theorem 6.4, and it says if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. Okay, what does it means? It means that if a transversal intersect two parallel lines, there are two parallel lines and it is cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of transversal, though if you remember, the interior angle on the same side of transversal was called as co-interior angle या consecutive interior angles. Okay, so the co-interior angles that are formed, that is the angles on the same side of transversal, is supplementary. Supplementary, it means that the sum of both the angles will be 180 degree. Okay, supplementary means the sum of both the angles will be 180 degree. So we have to prove that. Now given, consider AB and CD are two parallel lines. This theorem also has simple proof. Okay, understand that. So consider AB and CD are parallel lines cut by a transversal T and forming pair of co-interior angles are angle 1, angle 2 and angle 3, angle 4. So angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 are the pair of co-interior angles. Okay, to prove, what we have to prove? We have to prove that these angles are supplementary. It means angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree and angle 3 and plus angle 4 is equals to 180 degree. Okay, we have to prove this. Now what is the proof? Proof is, you also class 9, remember that the figure that I have made with each of the theorem, and because the figure is, the naming of the angles is important, because you have to name the angle accordingly, because the proof is based on the naming of these angles. It means I have named 1 here, 2 here, 3 here, 4 here. In the exam you can name any angle at any point. Okay, you can name at any angle at any point, but you have to use the concept accordingly, according to that angle. तो अगर जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे थ्योरम, तो अगर आपको ध्यान में होगा कि आपने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है, तरीका क्या यूज़ किया है, वे क्या यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए, तो उसके बाद आप एंगल को ए बी सी डी कुछ भी नेम करें, 1 2 किसी को भी नेम करें, बट वट यू आर गोइंग टू प्रूव यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, so that this is the thing, remember that. Okay, now proof. Since how will we will prove this theorem by using linear pair and corresponding angles. Okay, so let us see. Proof is, since ray QD stands on the line T, तो अगर आप T लाइन को देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है और QD इस पर रे है. So we will have angle 2 plus angle 5. Angle 2 plus angle 5 is equals to 180 degree. Angle 2 plus angle 5 is equals to 180 degree. It is a linear pair. Okay, because T is a straight line, QD is the ray. So angle 2 plus angle 5 is equals to 180 degree, linear pair. But angle 1 is equals to angle 5, corresponding angles. लेकिन angle 1 angle 5 के इक्वल है, या कह सकते हैं angle 5 angle 1 के इक्वल है. तो हम इससे हम ये कंक्लूजन पर आए कि it implies angle 2
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 5 के इक्वल था तो मैंने 5 को रिप्लेस कर दिया एंगल 1 से, एंड आई केम टू नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक पेयर आपका को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव हो गया, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पेयर कैसे सॉल्व करेंगे हम। नाउ यू कैन सी दैट रे क्यू पी स्टैंड्स ऑन द लाइन ए बी, ओके, ray QP is on the line AB. So angle 1 plus angle 3 is equals to 180 degree. Your linear pair. Okay. Linear pair. Likewise, ray QP stands on CD. So the ray QP stands on CD. CD के ऊपर है angle 2 plus angle 4 will be again 180 degree because it is linear pair. तो मैंने एक बार बोला कि QP AB के ऊपर ray है तो 1 और 3 linear pair हो गए. Similarly QP CD के ऊपर रे है तो 2 और 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गए. एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो गए. नेमिंग दीज एज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. ओके, नाउ ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया 2 और 3 को. व्हाट आई गेट, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. यू विल बी नोइंग दैट जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उसके LHS एक साथ ऐड होते हैं, इक्वल्स टू में इक्वल्स टू आता है, एंड देन RHS सब एक साथ ऐड होकर लिखते हैं, ठीक है. दिस इज द एडिंग टू इक्वेशंस. सो यू विल असेंबल कर लिया आपने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 एज यू हैव प्रूव्ड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आपने पुट कर दी वैल्यू. With that you get that angle 3 plus angle 4 is equals to 180 डिग्री, ठीक है ना. 180 डिग्री इधर आ गया, 360 में से सेपरेट हो गया, तो we get angle 3 plus angle 4 is equals to 180 डिग्री. hence proved, क्योंकि हमने 1 और 2 प्रूव कर दिया था पहले ही, और उसके बाद एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल आ गया. एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा 180 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है. सो द बोथ द को इंटीरियर एंगल्स आर प्रूव्ड एज सप्लीमेंट्री. hence angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree, angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree. Therefore each pair of co-interior angles are supplementary. Okay, this is the proof for theorem 6.4. Now moving towards the theorem 6.5, and this will be the last theorem that I am going to discuss in this video. From the next class we will discuss next exercise. So the theorem 6.5. Now theorem 6.5 is again a simple theorem, and it is a converse of the theorem 6.4. Okay, जो 6.4 theorem मैंने अभी आपको explain की, ये उसी का converse है. 6.4 theorem में आपको ये कहा था कि आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, आपको प्रूव करना था कि को-इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है. इस थ्योरम में आपको गिवन है कि एक पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल इक्वल है. आपको प्रूव करना है कि जब वन पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल इक्वल हो देन द 2 लाइंस आर पैरेलल. यू हैव टू प्रूव द लाइंस पैरेलल. तो लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए अगेन रिमेंबर दैट वी विल बी गोइंग टू यूज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. ओके, so the theorem 6.5 says if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary. Okay, मतलब एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया 2 लाइंस को इस तरीके से such that a pair of interior angles, इंटीरियर एंगल का जो एक पेयर आपको दिया गया है on the same side of the transversal सप्लीमेंट्री है, ठीक है, उनका सम 180 डिग्री है. देन अगर ऐसा होता है देन द 2 लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. Given, consider a transversal T intersects 2 lines AB and CD such that angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree. ठीक है ना, ये आपको given है कि angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree है because it is given that a pair of co-interior angle is supplementary. Now proof, since ray QD stands on the line T, okay, we will get angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. Okay, linear pair. Also angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree. तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट दैट बिकॉज एंगल 2 दोनों तरफ है, इट मीन्स मैं अगर दोनों साइड से एंगल 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से कैंसिल नहीं करेंगे एंगल को, ठीक है. तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट द एंगल 1 become equal to angle 3, okay, which are corresponding angle because angle 1
and angle 3 are corresponding angles. तो आपने corresponding angle prove कर दिए equal. It means AB and CD will never meet with each other. It means therefore AB is parallel to CD by corresponding angles axiom. Okay. Next concept is your, this is the theorem 6.5, and after that there is that lines parallel to same line. Okay, it is a simple thing that it says that lines which are parallel to same line are parallel to each other. Okay, so you can draw this figure and you know that if, और इसको हम समझेंगे कैसे कि वो कह रहे हैं कि lines which are parallel to same line are parallel to each other. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये given है, अगर आपके पास ये given है कि L is parallel to M, okay, and M is parallel to N, okay, L is parallel to M, M is parallel to N या N is parallel to M, तो इस M के दोनों लाइंस पैरेलल हैं, L भी पैरेलल है M के और N भी पैरेलल है M के. तो इससे क्या होगा कि L और N आपस में पैरेलल हो जाएंगे. इट इम्प्लाइज L इज पैरेलल टू N. Okay, so this is the this thing that lines which are parallel to same line are parallel to each other. तो इस तरीके से L, इस तरीके से आपके पास ये हो गया कि L is parallel to M is parallel to N. ठीक है, सभी आपस में पैरेलल है. सो पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने पर जितने भी दो पैरेलल लाइन, अगर जितने भी एंगल्स को, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करती हैं वैसे ही थ्री पैरेलल लाइंस भी सपोर्ट करेंगे. इट मीन्स हियर यू कैन सी दैट आई हैव मार्क्ड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड दीज आर corresponding angles. Okay, so in this way we will get that angle 1 is equals to angle 2 because it is corresponding on parallel line L and M, and angle 2 is equals to angle 3 because it is corresponding on parallel lines M and N. So therefore angle 1 become equals to angle 3 and L become parallel to N. This is this thing. So with this I want to bind up the today's lecture, and in the next class we will discuss the next exercise probably, and this is all for today. So watch the complete video, understand the concept clearly, and stay happy and stay safe at home. Thank you, class.